Sure. Laptop's speaker is not working. Sure, sure. Sure. Devendra sir, I would request you to please switch on the video. Thank you, sir. Um, Miss Geeta, can you please switch off your video? It's only for the speakers who have to switch on the video. Thank you. Yeah, great. I'm just waiting for Tavish to just switch on his video and then we can start. It's Tavish. Tavish, can you please switch on your video as well? Yeah, hi. 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 Okay, great. So now, without further ado, I'll just start it. So good evening, one and all present here. Today we are all gathered here to discuss about the growing atrocities on the downtrodden group and also to come down to a point that what's the step forward, how we should go about it, and how the people who were on the ground at that time, what were the challenges they had to face, and what they think should be the actual progressive change for coming now from the coming days now. So before we start, I would just like Mr. Sameer Srivastav, the co-founder of Vertex Law Chamber, to say a few words and also welcome our speakers and give a brief introduction about the organization. Over to you, Mr. Sameer. Hello and good evening, everyone. I, Samesh Srivastav, welcome you all into the today's session organized by the Workers' Law Chamber on how the pandemic has affected the downtrodden groups and what are the ways forward. So prior to initiating today's session, I would like to give a brief description about our firm, that is the Workers' Law Chamber. The Workers' Law Chamber is basically a Delhi-based legal firm consisting of three partners, me, Samesh Srivastava, Mr. Dipanshu Gupta, and Mr. Nitin Darmora. They specialize into the field of criminal, civil, and corporate sector. So, without taking too much time, I would like to request our moderator, Ms. Muskan, to kindly take charge and initiate today's session. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Mr. Sameer. So, without taking much of time, I would further first introduce our first speaker, that's Mr. Tavish Bilal. So, Tavish is a graduate from Jamia Millia Islamic. He has studied here human resource management and he has also had his own experience with the corporate world. But then, with the span of time, he got to know that development sector was something which moved him, which was something which drove him. So now he's in charge of youth empowerment in Turn Your Concern into Action Foundation. So thank you, Tavish, for joining us and thank you for being a part of this webinar. So with that, I would like you to let us know about the experience of the initial stage when you were there on the ground and how it came to your mind that we need to help these migrants to go to back their homes and what were the challenges too as a ground felicitator, as a person who's there from an organization bringing the change, wanting to do good for somebody faced, and at the same time, what were the hardships and stories from their side? How they were, what kind of thought process they had, and what was that all about? So, if you could just get us to that reality. Over to you, Tavish. Thank you, Muskan. So yeah, adding to what you said about the introduction. So I joined this organization called Turn Your Concern into Action in 2017 as an educator. So we mostly work on education, but we have a few projects on different thematics as well. So I joined in 2017, and just then we had a school inside the Heart University. So I was an educator there, and then after the fellowship, I moved on to different few projects. So I'm right now a program manager, and I'm looking after a few projects. So yeah, when this
chaotic pandemic started, the first initial thought which came to our mind was about our beneficiaries. On a personal view, I think it was the first realization was through our own surroundings. So, for example, our domestic helps, जो हमारे घर में काम करते हैं. In our colony, I'm sure we must have वो press वाले भैया. So उनका क्या होगा? So these were the initial thoughts that were coming to our mind. The second thought which came to our mind was about our beneficiaries, जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जिनको हम पढ़ाते हैं या जिनके साथ जिन कम्युनिटीज के साथ हम लोग जुड़े रहे हैं. तो पहले दूसरा थॉट उसके बारे में आया. So at the very beginning we thought that this is something that has a potential of a humanitarian crisis, which in this case turned out to be very true. So what our initial thought process was to get a bunch of people who were motivated to do something about it and not just be seen as I consider myself from a privileged class. So the first option that people like me and friends in our circle had was to just stay back home, be safe ourselves, and then think about what we can do. So that either it was this, or we could actively be on the ground and do something about it. So we went and decided to go with the latter, that is, be on the ground and do something about it. So we started finding started our lookout for like-minded people. So immediately what we did was start a WhatsApp group. It was very informal with our friends and other work circles, which majorly involved people who were working on ground, who have their own organizations, working with the community very closely. So I think we got together, and the immediate need was for ration. Our teams, our local teams in Madhya Pradesh, in Delhi, in Uttar Pradesh, started getting calls फ्रॉम द बेनिफिशियरीज. वो बच्चों के पेरेंट्स के कॉल्स आने लग गए, सर 2 दिन का राशन बचा है, क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. So these were the calls, the first very few conversations that we had. So immediately the first apparent need was ration. So we got together, we got together with a base of volunteers in different states. So we had volunteers from Assam, we ourselves were in Delhi, we had volunteers in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. These were the 4 states that we had volunteers. And so we started coming up with plans, and simultaneously fundraising was the first part, that how we can reach as many people as possible. So that was how we started from from a informal WhatsApp group. And yeah, so first, after we got together, we first identified very vulnerable communities. For example, in Delhi, we focused on right victims, जो जनवरी में हुए थे सीलमपुर वगैरह इलाके में, sex workers, transgender, and of course daily wage earners. Simultaneously, we were focusing on fundraising as well. Majorly crowdsourced किया था हमने. We came up with a website called India Against Corona, and we started fundraising from there. We also involved a few corporates like Zomato and PM Cares as well. We wrote to them extensively, but to no result, unfortunately. So the first problem that we faced here was there was a lot of accumulation of wealth. So PM Cares had so much money in them, but the challenge for them even, like Zomato and Feed India and Give India, so the challenge was then for what became for them was to disperse that amount. And to do that, they again had to partner with grassroots organizations. So that was the first challenge, that there was a lot of accumulation of resources. Moving on, the final start that we were able to do is that provided ration to 60,000 families in 4 states, which I mentioned previously. Second intervention was transportation. We I'm sure we must have seen tragic scenes of people
stranded on highways, walking barefoot with their families, with their luggages, with their makeshift bags, and things like that. So that was really something that hit us hard as a group. So immediately what we did was our Delhi group started scouting for stranded people and migrants at the border. So I covered Anand Vihar border, somebody else covered Badarpur border, somebody else did Noida border. So things like that we started. And we identified vulnerable groups who were already there, जो वहाँ फंसे हुए थे, जो बॉर्डर पे रुके हुए थे, उनको पुलिस जाने दे रही है, पैसा नहीं है उनके पास, तो ये इन ऐसे बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई किया। हमने थोड़े थोड़े प्रोसेसेस बनाने भी शुरू किए कि क्या एक्चुअली में किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बिकॉज अल्टीमेटली इट केम डाउन टू दैट कि वही बॉर्डर्स कंट्रोल करते हैं, विदाउट देयर कोऑपरेशन वी कुड नॉट डू मच। सो वी साइमल्टेनियसली वो वर्किंग ऑन प्रोसेसेस कि किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए लोकल गवर्नमेंट के साथ बसेस वगैरह अरेंज करने। We were again simultaneously completing as well. So we got in a few, we got great help from a few donors, and we got in gradually we got help from the local government as well. In total, we sent back 1,100 people in buses. We also arranged a flight and a train. Again, the major challenge here, I would say, was the cognizance of the problem from the administration. For example, Anand Vihar border comes under South नॉर्थ ईस्ट दिल्ली jurisdiction. तो वहाँ के ऑफिसर्स का यही प्रॉब्लम थी जब हमने उनसे बात करी, दे वर नॉट रेडी टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम। हम उनसे बोलते थे सर यहाँ लोग फंसे गए हैं, वो कहते थे कि कोई नहीं फंसा हुआ है, बिकॉज इफ दे रिकग्नाइज द प्रॉब्लम तो फिर उनको ऑब्वियसली दे हैड टू केटर टू उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दे वर इवेडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। But gradually through coordination and some lobbying as well, got them to come around. Another intervention that we are currently in progress is direct cash transfers. So we what we thought was कि एक बार हमने इनको घर भेज दिया है, बट ऑफ कोर्स वहाँ काम नहीं है, मनरेगा कैन ओनली absorb so much people. So what we did was uh, guiding, following in the footsteps of economists and sociologists such as P. Sainath and Aditi Banerjee, who are very much advocating for universal basic income and direct cash transfers. So we started this small project targeting 1,000 people, mostly who have walked back or cycled back to their villages, and to support them with direct cash transfers. To reach them, we are again partnering with grassroots level organizations who can help us in identifying such people. So right now we have conducted almost half of it. So we have transferred money. It's not much, but 1,500 rupees each family to 500 families till now in more than 10 states. Right. Going forward, I think the solution is to is, is to scale up the solution. I think we need the government to be cognizant of the problem. I guess what we are hearing right now is dilution of labor laws. Invest in the people right now who are affected. Give them support that we can, link them to whatever skills that we have, so as to reach as many people as possible. I think that is the solution going forward, and I think there are a lot of schemes. Right now is the best time to try and pilot with universal basic income. Such schemes such as direct cash transfers. Just to see where it will go. I think those are the schemes which are worth trying out for the government and civil societies, and for exactly to support civil societies and people who are doing such things. And I request if we can play that PDF. That's it from me. Yeah. So I'll just send that PDF, and if you would just want to let them know what was the story behind any of that, sure, then that should be.
collective wellness. Okay, visible? Yeah. So this is from the first intervention that was for ration. So this is me and another volunteer who was working with us, and these are the food packets that we arranged. You can go down. Yeah, this is one of the pictures in from Selampur, where actually the houses were burned in the January riots. Next. Yeah. So these were the few food packets that we arranged. So basic things such as rice, wheat, and things like that. Next. And yeah, these are some of the pictures from our buses that we sent. This is from the train. This group was going to Balrampur in UP. There were about 300 of them. Yeah, this is the screening center that we coordinated with for getting the screening done and to get the permissions. Yeah, and these last two pictures are from the flight that we sent to Patna, Bihar. So we got around, I think it was 180 people on a chartered plane back to Patna. And from there on Patna, we had volunteers who were that arranged buses for them to take back to their respective districts and places. Thank you, Tavish, for letting us know inside what it has been, what it was, and how we can go forward with it. Coming from that, I would now like to move on to our next speaker, Ms. Mistra. Now, first, as she told that, as he said that the time is that we need to be more there, universal income hona chahiye. There has to be a lot of things we need to work on. So, I think a brief about Visara. She has 6 years of professional experience in various aspects of child welfare. She has co-founded a social enterprise where she wanted to pursue a passion to work for the underprivileged children. Right now, currently, she is the co-founder of Yellow Streets and is a believer of transformative interactions and a lot of things. It was great getting in touch with you. It will be great to have a conversation with you. To this, I would really would want to know, Sarah, first, that having said that you have a knowledge about children, you have been a part of where children have been affected and you wanted to work in that aspect. So I think they were also one of those downtrodden groups which were very affected in both ways, like in terms of how things are going to be for them, how for like little children, babies who were like 1 year old, it was a problem for them. For women, it was a problem. For children, they were affected mentally and socially at the same time. And how hard it was for you to take that and then take it into a process with how I can help them in this time and how on the ground it was challenging to get their mental level also sorted that okay things will be better. We can do something about it, we can bring change and a lot about that. So yeah, over to you, Sarah. Thank you, Muskan. I just checked that if I'm audible because we have set up a different speaker. You are audible. Good to go. Great, great. Thank you for the introduction and thank you, Tavish, for the comprehensive explanation of what had happened on ground. I think we actually echo a lot of things that he has already shared. And we also work with Tavish and with the relief operation with few communities. So that's how we also met on ground once, twice. Yeah, I think this entire experience has been quite, difficult for each one of us. It's not only those groups, it's not only those people or women or children on streets or the underprivileged category, but even for us, it's been quite difficult. And just to cope the ever-changing scenario, and in 3 months, a lot has happened. If you can think back, and if we compare our lives 4 months back and today, it's quite
quite a change. And I just want to just take few instances from ground also to mention specifically about women's role in it. I think we also talked about that how women and children form the marginalized, group where they are the most affected. If we see the scenario in even in suppliers, how do we also discriminate that there are still women who would need some other things and requirements which we are trying to standardize, but we will have to contextualize when we try to cater to the entire set of groups. So yeah, I think so women specifically, if I can talk, I think they were, we do have stereotypes that women were not active and, in families or in groups that men are more seen on ground and men are more actively engaged in, at least in the groundwork or doing some manual part. But to my surprise, I think women were there all throughout and not in our team, but not also in the communities we have worked with. I would also like to mention a few names because I have met some inspiring women who have been there on ground and have faced challenges of their certain identities and have that crossed all the limitations encounters and they have shown immense courage to be there and just, tackle the situation and benefited men and women together. So, yeah, because some of the areas that we cover, I also talk about the background and of the work and the areas we could cover. So we also started with our direct community. So we've been working on ground 3-4 years, and we do have communities in Southeast district. We started with them, and then we expanded to the entire city. And we could also send a lot of laborers, migrant laborers to their hometown. Similar to what Tapish had shared, our work was pretty much the same. I think specifically in terms of visiting communities, talking to them, and analyzing the actual need was something that we could do on a very I think timely. We were actually quite proactive in that. So before we think about solutions, we could actually ponder upon the problem first. I think it was quite a shock that lockdown was announced, their jobs were taken off, there is a lot of uncertainty, which also affected their mental health in a lot of ways. So when we talk about the solutions, yes, we could actually think about the basic essentials that, food, proper food and hygiene kits, because it was also a pandemic, they need to have those sanitizer, gloves, masks in place so that they can be safe. Along with that, lot of awareness. There were a lot of superstitions in the communities around this disease when there was an inflow of information over WhatsApp, over different platforms, and the right information also needs to reach the right people. And we could actually do some bit of our groundwork on that, spreading awareness, taking responsible action. When we could talk to our kids who were also working on ground relentlessly in the relief activities, because all the regular activities were stopped are still on hold. But they could join hands in the relief work at least. So they were very proactively spreading the right information in their communities. So everybody was responsible to talk about the disease, to talk about the consequences, also the right information to where to go when you have symptoms or if you need some medical assistance. So I think there were few action points given to them and they worked on it. So till now in our communities we haven't heard of any positive case till now. Then we wherever we could work directly. And apart from that, I think we have also been expanded to different places in Delhi, to Nakloi, to Northeast Delhi, where the riots had happened recently, to different parts of in each zone of Delhi. We had volunteers who were looking after each district and zone. So we could actually do a very organized sort of drive where we knew that we are trying to ration and hygiene kits to each this particular family from this district, and we have a group working there. So it was quite organized in a way that we knew where the relief items are going, and even the quantity of the relief items was placed such that it could provide some respite to the family for a month. So we don't have to go back again like in 10, 15 days because they have spiced it
on average, every family had 5 to 12 members in one family. So we could also, play around the quantity, and then therefore we decided on the quantity. Also, we did not compromise on was the quality of item that we are giving, because whatever we are giving, we also need to be able to see that we are also consuming the same thing. If we are getting very cheap or very nominal costing for the Russian kits, I think we are not doing justice to the people we are trying to provide relief. So I think we did not compromise on the quality as well. That whatever we are trying to give to the family, the same quality we are also consuming. So I think that standardization should be there. And I think coming back to the women's role and their struggles and their achievements, I think they have. I would like to talk about this Samija here. She is very very active in the area called Chandunagar. Right next to Shiv Vihar, where the rights I have. So the rights was started in that area, and she was the one whose house was burnt in those rights. And in spite of having these challenges, she had to shut down her little enterprise of. She had a sewing machine, and she was a tailor, and she had to shut down her own livelihood for that. She has 3 little children, and since the time of riot till today, she has been working in the community and have provided families in the neighborhood. And she is a woman. She has another story is from Nagroi. There's a lady called Tulsi. She must be in 30s, and she's been also doing relief work where normally people are not able to go to these places. Nagroi is very secluded. It's in the outskirts. Not many NGOs also work, but she was at it. She was tirelessly working with different groups and NGOs to get aid for people in her own community. And she could also help around 500 families over there. And she's a government teacher, and she's been really working hard till today, and she's trying to set up a livelihood center for women in her locality. Another, I think, from the funders end, there are two beautiful ladies, Avni and Isha. They are in South Delhi, and they have been trying to accumulate resources for the Pan India process they've been running, and they have done some immense collaborations with some groups and civil societies, government, individuals. We created a very good network to provide relief to multiple families and groups, and relief in terms of ration and medical facilities, also in getting them to their hometowns. So yeah, I think when we talk about women all the time, I think we talk about the limitations, but I would like to really focus on those powerful qualities that women have, that powerful quality of empathy that a woman is very capable of, and that was really demonstrated in every aspect of the journey. Yeah. Thank you. Obviously, even during when I was on this journey of, though I was not on the ground very evidently because I had to travel and everything, but yeah, there were a lot of women out there. If not, in very specifically why to go, I will not sit in the ground at their homes. They were suddenly put. The woman who was a housewife, obviously she's already looking after the family. Now now the family was there at home 24/7. She had to look after them both mentally, make sure that they're getting food on time, they're mentally also not disturbed, unstable, and if the work is not going right, I am here to help you. So when it's all about empathy, compassion, and everything, women have always been, and I think this time of pandemic has shown us how in the house, on the field, everywhere they were there supporting and make the positive outcome more positive for everybody. Like things can go better, things will be better. So yes, moving on to Seth. So first I would want to introduce him. Seth is one of the key members of the Rugby India Development Team and is responsible for overseas governance of sport in North India. He was the one who conceived the idea of Yellow Streets to youth game as creating inside out change.
He's an active member of UNESCO Sports Task Force to utilize sports as an enabler of goals, global goals. Thank you, Seth, for joining us. So, to that, Seth, to coming, you were also part of the same process, you said, and you have been on the ground looking at the realities there for like Tavish has seen you, you have seen everybody has their own story. What I wanted you to also tell, like I think we had the conversation that day also, that I remember that these solutions are there. We are there to help you. We are there to guide you. We are there to make things better for you. But do you think these solutions are somewhere down the line making the groups more vulnerable? Like vulnerable, when I say vulnerable, I'm saying that in the sense they will not be like, but they're used to it now. They think that this is the new normal for them. And if yes, then is it because it's a problem? Because eventually we are here to become something which is constant and progressive, which brings change in individuals at their own level and not something which somebody has to provide and then they feel a certain amount of change. So how that should be addressed? And obviously, how you think that this new normal has somewhere down the line has been advantages? Yes, okay, fine, people have gotten that idea, okay, necessities have to be taken into consideration. Lifestyle has to be more simple and people have to think before things are overutilized or everything. But the new normal for these downtrodden groups can be problematic in the long run when things turn down to normalcy and when the people like us or NGOs and organizations like us will be doing our programs which will be at a constant level of change and then we will not feel that we will feel that certain need and that problem. Like how you would address it. What do you say? Yeah. Hello. First of all, thank you so much, Muskan and the Vertex Law Chambers for considering us able to come and represent here and share your thoughts. And hi, Tavish. How are you? So I thought that it was good to see him working, Jatin. Anyway, so as you first said, when we, as an organization, we kind of work on building aspirations and emotional intelligence of people on the streets and in the juvenile homes to medium of water. And so this particular project where we would be providing relief to people was not like planned or we never wanted to do it because we had trust that there are a lot of organizations and our dear beloved government helping us through this stuff. Right? So in the very beginning, we tried a lot reaching out to people, but in the beginning there were less hands, and it was very new to all of us. So we kind of were told that we have less hands and we are will not be able to provide food so quickly. So we started this little project for just our communities which were calling us continuously, sir, what to do, where should we go? We are very helpless and everything. And then slowly, so we also formed partnerships with the COVID response volunteer team, which you saw on page. And my mentor, Rajesh Sri Nandan Meher, has been, he's been mentoring us in the past 3 years. We have been trying to create the spirit of volunteerism and getting a lot of young people on board. For any capacity, they can come in from mentoring the sheets or trying to, do verifications of the community. We're trying to get everybody together and work upon it. So I think this is the power of this sector, right? So this is why this sector kind of held me to it, and I call it home because we, apart from like the corporate sector, we try to grow each other, and we try to work together and create a synergy to achieve a goal. So that's what we do in rugby. And rugby is a team sport, and we all play some little parts to put our egg-shaped ball, which is like a flag, to the other person's territory and mark our territory there. So basically, when you tell me the way forward, I would like to say, like in rugby, we pass the ball backward to go forward. So I think the best way forward is to go backward to a normal life, try to try to make them realize that the Rajat thing is started, which is why we are all emotional. All of us are emotional. All of us have empathy. All of us have that kind of care for the people who have been this society who have nurtured us, like in a lot of ways,
they have built our buildings, they have plowed our fields for the grains we have, and little things, we don't even know it, but they have nurtured us in so many ways. So that was the first that pain thing which came in, that what about these people? So, okay, working from home, staying from home, but then what about people who don't have a home? What should they do about it? So then all of this started, but yes, so as they say that yesterday's solutions are today's problems. So we got into it. Everybody. So I'll use both language because there's a lot of people who are messaging me. Sure, who sure. also yeah. तो बहुत सब लोगों ने अपने पूरी जान से पूरा जान लगाया और पूरा कोशिश किया कि हम लोग ये इसको अकम्प्लिश कर पाए. All of the organizations started doing relief work from RHA, Robin Hood Army, to ICR, to Yellow Street. There are a lot of people who came forward. And I think it was necessary in the very beginning because there was less mobility. One. Second of all, there was a lot of people started holding things, but also because of hoarding, people started to raise the prices of things. Like a 40 rupee kg sugar became 60 kg rupee sugar. And it was, even if they wanted to survive from their savings, that was getting hard for them. So I think it was very important for all of us, and I congratulate everybody who took part and, kind of made this happen in the very first few months. But now, as we see, and as I have realized, because I've been to red zones, I've been into hospitals, and because of minimal protection, like the basic protection if you follow, hopefully we will not get COVID. And now there are companies open with 40% labor where we can restart our lives. There are things open, thriving, just waiting for people to come and start working so people can restart their lives. I will not say that okay, the lockdown is open, we should stop giving them ration because now that they can buy, they cannot because they don't have the money for it. But also, I always say that the solution created a problem. We catered to a lot of people. Some people, what happened was they were a big Mazdoor camp. Some people we transported because they were from other cities. Some people who stayed, we gave them a month-long ration. And then later, I got few calls and they needed some laborers for some work. I thought, why? Well and good. I should send these names. They'll get some work. And then when I send the name, they said, हम क्या करेंगे जाके 10 NGO काम कर रही है, 4 को नाम दे दो और राशन आ जाता है. करते रहेंगे हम लोग. So I think I don't like to मतलब मैं नहीं प्रमोट कर सकता ये सारी. Because at the end हम लोग बेगरी से लड़ते हैं. हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे जब बच्चा हमारे कार के साइड में आता है तो हम शीशों पर खड़े कहते हैं अरे यार बिल्कुल बन चुका है ना. जब हम ये सारी बातें कहते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए, कुछ लोग एक्चुअली वहाँ काम कर रहे होते हैं, इस वजह से वो लोग करते हैं. बट दैट मेनी चीज. सो अब ये जो न्यू नॉर्मल आप कह रहे हो, जब ये न्यू नॉर्मल तरीका ये आया, आई थिंक इसके अंदर ये इवॉल्व काइंड ऑफ बेगरी बन गया है. ये मेरा टेक है इसके ऊपर. इतनी तरीके से मैंने देखा है. बिकॉज एक पीओसी होगा वो राशन मांगेगा सब, या फिर वो बेच दिया गया राशन, या फिर एक कम्युनिटी ने ले तो लिया, लोग 4 जगह से और ले रहे. तो बहुत सारी प्रॉब्लम है. बट ऐसा नहीं है कि हमारे एफर्ट खराब है. बहुत लोग को मिला है जहाँ जरूरत. बट अब आपके साथ क्योंकि इन लोगों ने इसको मोल्ड कर दिया है. एंड आई थिंक the best way is to now let them know कि हाँ शुरू में there were problems, these things happen, we helped, but now let's help yourselves also. But when we say the word underprivileged, when we say the word downtrodden, I think क्या privileged और ऐसा कुछ लगता है कि जब मेरे हाथ पैर सब सही सलामत है तो मैं खूब privileged हूँ कुछ भी करने के लिए. राइट. मैं पैसे से नहीं नापूंगा अपनी प्रिविलेज, मुझे लगता है. तो आई थिंक अब जो आगे का हम लोग सोच रहे हैं, पीछे जाते हैं थोड़ा सा. वैक्सीन बनेगी, जब तक बनेगी हम लोग देखा जाएगा. फिलहाल जैसे यार कम्युनिटी स्टार्ट स्किल मैपिंग. क्या आपकी कारीगरी क्या थी, आप कारीगरी क्या थी, रसिंग बनाते थे आप. अच्छा आप सेवा का काम करते थे. अच्छा आप डोमेस्टिक हेल्थ, आपकी सैलरी कितना आता था उस टाइम पे. ठीक है. आपका मतलब अगर आपको हम लोग एक स्किल सिखाएं और आपको एक माइक्रो फाइनेंस तैयार करें, तो क्या आप बिजनेस चला के
आप अपने फैमिली मतलब इस कम्युनिटी, हम लोग कम्युनिटी को एक कर रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर की कम्युनिटी, फ्लाईओवर के अंदर 12 फैमिली, उस फ्लाईओवर की फैमिली के साथ हम 1.5 साल से काम करूँगी बच्चों के साथ, जिसमें से काफी बच्चे नेशनल लेवल पे अपना स्टेट को कर चुके हैं रिप्रेजेंट, काफी लोगों की जिम में जॉब लगी, मतलब हमारा 3 स्टेजेस में काम है, पॉज, रीस्टार्ट, रिफॉर्म। तो पॉज जो स्टेज है, स्टेज है, वो रियलिटी जो है वो देखकर जहाँ से भी आप आए हो, आप कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से आए हो, कोई क्राइम करा था या कूड़ा बीनते थे या जो भी आपकी लाइफ थी, उसका एक हमने करिकुलम है, उस करिकुलम से हम लोग की रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनकी एस्पिरेशन बिल्ड करते हैं, रिस्टार्ट करके चलो जो हुआ ठीक है, अब क्या करना है, उसके हिसाब से रिफॉर्म स्टेज पे उनकी अपनी स्टोरी वो लोग बताते हैं कि मैं 306 अटेम्प्ट मर्डर से की वजह से गया था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को हिट बेस किया, अपने मेंटल हेल्थ पे काबू पाया और अब मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ एज अ रग्बी प्लेयर, और मैं रिफॉर्म हुआ हूँ एक कोच में और एक चेंज स्टोरी में। तो ये तरीका है हमारा काम करने का जरूरत थी। तो अब जो है मैं था उस 19-20-23 के जो मार्जिन मैंने रखा था ऑर्गेनाइजेशन में, उससे अब मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ पेरेंट्स के साथ। तो हम यही कुछ चीज पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, उनकी स्किल मैपिंग करके जो उनका एक्सिस्टिंग कंडीशन है उसका पूरा नीड एनालिसिस करके और छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस उनके खुलवा के, बिकॉज क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत पकड़ है सेक्टर पे और पकड़ है मार्केटिंग में, तो क्यों ना हम उन्हीं की जो पहले से काम करते थे उसका और जैसे बहुत सारे लोग मूर्तियां बनाते थे, आप जसोला की साइड तो राइट में गणेश जी की, शिव जी की बहुत सारी मूर्तियां बनी रहती है, स्कल्पटिंग करते हैं, ब्रिलियंट स्कल्पटिंग करते हैं वो लोग। तो उनकी कम्युनिटी को क्या हमें कुछ कंपनी है जो वो स्कल्पटिंग जॉब ऑफर कर रही है और क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उनकी कैपेसिटी बिल्ड करके उनको वहां नौकरी दिलाई जाए, है ना। तो येलो पेजेस होते हैं ना, पहले छोटी सी नौकरी है, एक तो छोटा सा एक कनेक्शन पोर्टल प्लस एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो जैसे अभी समीजा की बात की उन्होंने, समीजा जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो उसके साथ 6 औरतें हैं, 6 औरतें साथ मिलकर 20,000 रुपए महीने पे एक हॉल है, आप उषा सिलाई के साथ पार्टनरशिप में 10 सिलाई मशीन के साथ उनका कपड़े का काम शुरू होगा, उनका अपना एक वेलफेयर फंड बनेगा, उस वेलफेयर फंड से वो अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम हल करके और अपनी सैलरी देगा, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने का काम हमारा है, उनकी पार्टनरशिप प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम हमारा है। तो ऐसे छोटे छोटे सपोर्ट सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि कपड़े का हो, रेस्टोरेंट अभी कर रहा हूँ, मतलब रेस्टोरेंट नहीं क्लाउड किचन है, जिसे आप किचन सिस्टम है बेसिकली, कम्युनिटी किचन जिसमें विडोज है सारी हमारे साथ जुड़ी हुई, और तो उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर डिलीवरी एजेंट का है, हीरो साइकिल से साइकिल देकर उनको साइकिल दी जा रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि जॉब क्रिएट करें। अगर हम इतना नहीं क्रिएट कर सकते, और मुझे ये नहीं कि मैं अभी तो एक छोटा सा पायलट आइडिया है, तो अभी मैं 4 कम्युनिटीज के साथ कर रहा हूँ, बेसिकली मुझे कंप्लीट करके थोड़ा सा गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटाने हैं कि क्या हम ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के नाम, बिकॉज हमारा तरीका जो है एम्प्लॉयबिलिटी सिखाने का है, और बिजनेस को कैसे सस्टेन किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, बिजनेस कैनवस होता है, रेवेन्यू जनरेशन होता है, ये चीजें इन लोगों को समझ में आए ना और इनको समझाई जाए, तो आई थिंक एक छोटी सी चाय की टपरी भी बहुत बड़ी चल सकती है। आप चाइना और बड़ी बड़ी सिटी में उनके कैब ड्राइवर और उनके इवन जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले होते हैं, उनकी इतनी अच्छी कैपेसिटी बिल्ड होती है, वो इतने अच्छे से अपना जॉब सीरियसली लेते हैं कि उनका वहां से वो जॉब रिस्पेक्टेबल होती है और बहुत ही ज्यादा यूज करती है, दूसरी इंडिया से लोग जा जाके कैब चला रहे हैं, जस्ट अ थॉट। Yes. तो रेस्टोरेंट से कि हम लोग को वे फॉरवर्ड में सब लोग को एक साथ आना पड़ेगा, मुझे तो ये मैं अभी मैं और इसका भी आइडिया है जो ये क्रिएट करके वी आर रीचिंग आउट टू ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम इसका एक पायलट कर लें, फिर हम टाइसिया को भी ईमेल लिखेंगे, फिर हम एमसीक्यूएस को भी ईमेल लिखेंगे, वी वांट टू क्रिएट दिस बिग अम्ब्रेला ऑफ like an Avengers of organization which can create this kind of support system in this new situation that we have right now, है ना, because I don't think कि नियर फ्यूचर में अभी कोई रशिया की तरफ से थोड़ा बहुत हम लोग को राहत आई है कि कोविड वैक्सीन हमारी बन सकती है, जब तक नहीं हो पाता तब तक शायद हम कोई ऐसा चीज क्रिएट करते हैं कि हम जैसे हम पहले रह रहे थे
अगर ये चीज पहले तक हो जाती तो शायद सड़कें थोड़ी अच्छी दिखती हमारी, शायद फ्लाईओवर्स कवर ना होते, हम लोग एक ऐसा हब बने हुए होते जहां हम लोगों को सड़कों पे उठा के उनका उनकी रिहेबिलिटेशन, उनका रीस्टार्ट और उनको रिफॉर्म करके हम लोग सबके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा कर पाते। तो बेसिकली सारा आइडिया यही है कि अब इन लोगों को हम लोग थोड़ा मछली पकड़ना सिखाएं और तरीके से सिखाएं। त्रिवेणी के ये कांटा होता है, ऐसे डाल के आते तरीके से सिखाएं कैसे हुक की जाती है, जब मछली खतराती है तो कैसे जो गंदी होती है उससे कंट्रोल करना पड़ता है, जब रुकती है तब रील करना होता है मछली को, सारी चीजें। क्योंकि जहां तक आप स्किल इंडिया देखो, स्किल इंडिया में आप स्किल सिखा दोगे किसी को, बट आप एम्प्लॉयबिलिटी अगर ना सिखाओगे तो स्किल लेके सीधी बेचेगा एट द एंड ऑफ द डे। एमबीए की ले लेके पीपल आर सेलिंग स्किल्स, दिस इज द रियलिटी हमारी। बट this is what happens. We teach a skill, but we don't teach them how to use the skill, in what way, what kind of emotional intelligence you need. So what is life skills? Can anybody tell me life skills होता क्या है? तो हम लाइफ स्किल्स सिखाते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन। तब लाइफ स्किल्स का मतलब क्या है? कोई भी ऑडियंस, anybody can take up. कोई कहना चाहता है तो We have a lot of questions already coming in, but which I'll take afterwards. Anyone? नमस्कार, आप एक पॉइंट जरूर बताना। मैं तो मतलब yeah, for me it has to do something with जहाँ पे we are able to what you call it, there has to be a balance of both IQ and EQ. Like because IQ अगर ऊपर हो जाएगा और EQ कम हो जाएगा तो eventually you will fail, because eventually your emotions will overpower you as humans. Your IQs will only lead you to a certain business sector. But what are you going to do with when it comes to make that business viable and sustainable? Your emotional IQ has to work. And that has to have balance. So for me, it has to be a correct balance of and IQ. Brilliant. So exactly. So this balance comes जब आप लाइफ स्किल इक्विप्ड होते हो और हम लोग लाइफ स्किल सिखा रहे होते हैं। आई थिंक लाइफ स्किल्स का बेसिक मतलब है सर्वाइवल स्किल्स। कि घर में अगर पंखा खराब हो जाए, तो मुझे मालूम है क्या करना है। बेसिक वन पॉइंट, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है ना। तो बेसिकली हम लोग इस सेक्टर में जो लाइफ स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली स्किल सिखानी है, ये कैटेगरी ऐसी होती है। लेकिन लाइफ सर्वाइवल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, द बैलेंस बिटवीन EQ एंड IQ, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी, ये जरूरी है सिखाना ताकि उसका कन्वर्जन हो पाए, है ना। कन्वर्जन के लिए तो अभी हम लोग कोशिश हमारी यही चल रही है, जो हमारा कि हम उसको फ्लो देने के हाथ में 4 बहुत लोग कर रहे हैं। There are people who have India होगा, मतलब बहुत सारे हैं give something उठा लेते हैं। हमारा है थोड़ा इंटेंसिव काम, रेजिलिएंट कम्युनिटीज बनाना, कम्युनिटीज को जॉब दे देना, ठीक है, वहां से उठा लिया। देखो आप केस स्टोरी देखना, तो एक होता है IIT में चला गया, एक होता है बहुत बड़ा डांसर बन गया, ये कम स्टोरीज है, ये रेयर स्टोरीज है। और बाकी अब आपने बुलाया तो मैं थोड़ा सुन के बोलता हूँ चीजें। तो मैंने सेक्टर में ना मैं डायरेक्टली जंप किया था। अब मुझे समझ सेक्टर में मैं खेलता था, स्पोर्ट्स में था। स्कूल में मेरे लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मैथ, साइंस, हिंदी थी, और मेन एक्टिविटीज मेरी स्पोर्ट्स, डांस, सिंगिंग, ये सारी हुआ करती थी। वहां से चलते आते थे मैं सेक्टर में इस तरह की वजह से घुस गया किसी तरीके से। एंड मैंने नोटिस किया कि NGO सेक्टर पे उंगलियां ज्यादा ही उठती हैं, क्योंकि शायद हम लोग ही बहुत ज्यादा कैपिटलाइज करते हैं कमजोरियों के। चप्पल नहीं है, फोटो खींच के डालो, इसकी चप्पल को 10,000 लोगों से लेके फिर वो चप्पलें आ रही हैं उनकी। और मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजों पे जिनपे कैपिटलाइज किया जाता है, लोगों को रखा जाता है। एक कम्युनिटी मैंने पकड़ ली है, अब इस कम्युनिटी को मैं सर्कल बना दूंगा, यहाँ पे मैं 4 लोग को बुलाऊंगा, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो आके, यहाँ मैं 4 लोग को बुलाऊंगा, ये करो, एक सर्कस बना देते करके। उनको छोड़ना नहीं चाहते कि अगर अपने यहाँ काम कर रहे हैं छोड़ दें तो हमारा ऑनलाइन पे मीडिया हम क्या दिखाएंगे, हम उससे ग्रोथ कैसे करेंगे। हम लोग, मुझे लगता है कि बस दीवार पेंट करने का, सड़कें साफ करने से हल नहीं निकलेगा इन चीजों का, है ना। तो आई थिंक थोड़ा सा इंटेंस काम चाहिए। आई थिंक सड़कें साफ करनी है, बस उन्हें बस भारत
गली से निकालना है, मैं सड़कों से निकालना है, उस गली को ग्लोरीफाई नहीं करना है, हमको जाके पेंट नहीं करना है कि देखो ऐसे रह रहे हैं। हम लोग को इंटेंसिफाइड काम करना पड़ेगा आगे। अब से हम कोविड-19 के इस फेजेस में हम आगे बढ़ेंगे, तो एज ऑर्गेनाइजेशन पहले हम लोग को एक बड़ी सिनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबका डिफरेंट एक्सपर्टीज। मेरे पास मेंटल हेल्थ एक्सपर्टीज नहीं है ना। अगर मैं कल को, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे कि डिलेरियम ट्रेमेंस एक बीमारी है, शराब छोड़ने से होती है। बहुत शराब आप अगर पीते हो और अगर छूट जाए, लॉकडाउन की वजह से छूटी होगी, तो डिलेरियम ट्रेमेंस हो जाता है। वो एक मेंटल इलनेस है। कुछ मेंटल इलनेस आके आप अपनी वाइफ को मारने लग जाते हो। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको इस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि टर्बुलेंट फेज से आता है, क्योंकि ज्यादा केसेस आपको नहीं मिलेंगे। आपको शायद नए केसेस जो है, जो आजकल मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे कि लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, लेट्स टॉक अबाउट, लोग आते हैं फेयरली प्रिविलेज तरह से आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरा ब्रेकअप हो गया था, ये था या वो था, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आई थिंक जो टर्बुलेंस कंट्री में आती है ना, वो इसी स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर आप गलत गाइड कर दोगे तो राइट होंगे। यहाँ पे अगर आप मेंटल पे काम नहीं करोगे तो डिलेरियम ट्रेमेंस अपनी बीवी को मारेगा और उसी की कहानियां बाहर आएंगी, और उसी की वजह से चाटा बढ़ेगा, कितना वायलेंस होता है, कितना ये होता है, कितना वो होता है। तो आई थिंक मैं खत्म करूंगा, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, इधर उधर निकल जाता हूँ। So I think rehabilitation is very important for these people, understanding their mind, making them unlearn things, making them learn things, then teaching them how to earn money in what way, and उसमें भी like how to manage money, how to and also how to talk, how to कोई emotional intelligence और communication skills सबकी बात होगी। ये करके ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कि बिजनेस डाउन चले जाएंगे। देखो यही होता है जब प्रेशर आता है ना, जब किसी के अंदर हम लोग को ऐसी चीजें क्रिएट करनी होती है और होंगी कि पॉइंट में थोड़ा सा नीड एनालिसिस क्रिएट लोगों के लिए कर पाए, जहाँ पे लोग जैसे अभी शुरुआत में सबसे फर्स्ट एस्टिमेट में लोग एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, मार्केट बनवा रहे हैं, है ना, कि वो लोग अपना लाइवलीहुड से कमा रहे हैं। ये एक चीज नहीं, ऐसे हम 10 चीज कर सकते हैं, बट वो भी फेल हो रहा है। जैसे एक ने नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट किया, शुरू में किया, खरा खत्म हो गया। क्यों? बस आइडिया था कि चलो एक बिजनेस खोल लेते हैं, इधर से 1 लाख रुपए आ गए, इनको 4 सिलाई मशीन से कर दो, और उसकी मार्केटिंग की, उन लोग को समझाया नहीं कैसे करना है, उन लोग को डीलिंग नहीं करते आके, पूरा उनको छोड़ दिया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट रिहैबिलिटेशन पे, उनके रिस्टार्ट पे प्रॉपर तरीका रिस्टार्ट का, और फिर हम लोग एक नया रिवोल्यूशन करेंगे इसके अंदर होपफुली, और रिफॉर्म करेंगे अपनी अपनी लाइफ। एंड ऑन द एंडिंग नोट मैं चाहूंगा कि इस कॉल जो है हम कॉल कर रहे हैं, आई थिंक सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने के अलावा और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने के, जो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और होपफुली भी होपफुली दिवेंद्र सर से भी बात करें, थोड़ी सी उनकी सब कुछ सीखूं, और है ना। तो ये थोड़ा सा लर्निंग एक्सचेंज करने के साथ साथ हम लोग कोशिश करें कि हम इसको टेक फॉरवर्ड करें इस कॉल के बाद। हम लोग एक डॉक्यूमेंट तैयार करें, उसके ऊपर हम लोग एक साथ काम करें। तो जितने लोग यहाँ कॉल पे हैं, जिस कैपेसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम शायद एक रे ऑफ होप निकाल पाएंगे येलो कलर, और थोड़ा बहुत चेंजेस ला पाए। थैंक यू मुस्कान। Thank you so much. That was lovely. Having said that, बिल्कुल सही कहा आपने कि we have to bring after this has to be taken forward. This has to be taken forward by us. From all of this, one here as participants, we, everyone. Coming to that, moving forward to Sir, Mr. Sir, I would like to first introduce Sir. So, Sir is the CEO and founder of Tardin Foundation Trust. He is conferred with the National Youth Award. He has also been felicitated by the Delhi Police for his gender mass sensitization programs. Recently, Sir has been also appreciated and acknowledged by ICI Lombard for being the superhero in the times of COVID-19, and has a lot of things to be discussed and a lot of achievements to be said. Keeping it short, Sir, I would come to you, and first of all, I would want you to let us know, because now that we've known ground की realities क्या है, migrant laborers वहाँ से कैसे Kavish has its own way, Seth and Yusra told us are its own way. आपने ground पे काम किया, you did work on the ground, as well as you were part of, you were a part of the Delhi police, you were also coordinating with police, you were there
as a representative of police who wants to make the change, and they're at the same time having that field experience of so long and इतना सब कुछ. How was the different mindset? मतलब वहाँ पे पुलिस किस तरीके का चेंज मांग रही थी और लोग किस तरीके का चेंज मांग रहे थे और आपने वो कैसे मैनेज किया? Number one. Number two, when I come to domestic workers, as Tavish told, so I will come up to you because आपने बहुत ही मतलब आपने इंटेलिजेंटली मेड श्योर कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स है, उन लोगों के तक राशन पहुंचे, उन लोगों को राशन नहीं, उनके साथ उनकी जो न्यू बॉर्न बेबीज है, इन्फेंट बेबीज है, उन लोगों को मिल्क प्रोवाइड हो, बिकॉज दैट विल बी वेरी वेरी बिग नेसेसिटी. यू ऑल्सो मेड श्योर कि हम लोग जो ये विमेन है, दे आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट द नीड इज, व्हिच इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन, बिकॉज ऑब्वियसली जिसके घर में दाल रोटी नहीं होगी वो नहीं खाएगा, उसका husband will not get her to buy the menstrual pad because obviously they feel that that's not something which is a need of the hour because that mindset has to be framed up. ठीक है, having वो सब उसके बाद at the same time what is according to you the way forward, like as Sap said कि हम लोगों को we have to build on the emotional intelligence, we have to build on a lot of other things, we have to make them skill worthy of like they can be well of their own. But how is that? How we are going to move forward with that? Over to you, sir. Thank you so much, Muskan. मोस्टली अधिवक्ताओं के साथ आज पाला पड़ा है, तो थोड़ा डर के रहने की जरूरत है, बट बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसी फ्रेटर्निटी जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है, उसने इस डिजास्टर में, मैं इसको डिजास्टर ही कहूंगा इस पैंडेमिक को, कि इस डिजास्टर में ह्यूमैनिटी के नाते उनको एक जस्टिस दिलाने का काम किया है, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल. तो जितने भी चाहे मैं जो भी अभी जो मेरे प्रीवियस स्पीकर्स थे और जिन्होंने काम किया है ग्राउंड पे और वो जो काम कर रहे थे, मैं उसके लिए पर्सनली आई रियली वांट टू थैंक देम और उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि इस डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि यहाँ मैटर क्वेश्चन मत करने का नहीं था, यहाँ मैटर ये नहीं था कि हमें जाकर के लोगों को राशन बांटना है या हमें लोगों को रिहेबिलिटेट करना है. यहाँ मैटर ये नहीं था कि हमें लोगों को ये परेशानी हो रही है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन देना है. यहाँ एक उससे बहुत बड़ा मैटर था, वो मैटर ये था कि हमें अपनी जान की दाव पे लगानी, जो कि इन लोगों ने लगाई. जब ये लोग ग्राउंड I think, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello? Yes, sir. I can hear you, sir. We can hear you, Hello? sir. Oh, we can hear you. You can hear me? Can you hear me now, Muskan? Yes, sir. You're audible. You're audible. I'm not getting you. Am I audible to you guys? Sir, am I audible to you? Audible, Tavish? Yeah. Yes, you are audible. Yes, yes. तो ये जो आप लोगों ने जो काम किया है ना ग्राउंड पे जाकर के, ये काम सोशल वर्क से बहुत ज्यादा ऊपर. एक बॉर्डर पे जब सैनिक खड़ा होता है तो हर कोई बड़ा इजीली कह देता है कि वो लोग तो वहां पर काम नहीं करते, लेकिन जब गोली चलती है दूसरी साइड से तो उस गोली को पता नहीं होता कि उस गोली पे नाम किसका लिखा हुआ है. सेम उसी तरीके से जब ये लोग जा रहे थे ग्राउंड पे काम करने, तो इनको नहीं पता था कि किस बंदे से इनको वायरस लग जाए, किस बंदे से इनकी जान खतरे में है. तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि एक रिस्क था जो ये अपनी जान हथेली पर लेकर के निकले और ये काम किया. और ये मैं खाली इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ड्यूरिंग कोविड जितने भी लोग फील्ड पर थे, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स थे, चाहे वो डॉक्टर्स थे, और पता सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो कोई मेंशन नहीं करता है, इन लोगों को कोई मेंशन नहीं करता है, बट दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. इस पैंडेमिक में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो इन लोगों ने. हमारी ड्यूरिंग द एक्टिविटीज देयर इज IPS ऑफिसर नेम मोनिका भारद्वाज, वो हमारी एक्टिविटी में कोविड पॉजिटिव. हमारी एक्टिविटी में SHO मधु विहार राजीव कुमार, वो हमारी एक्टिविटी में कोविड पॉजिटिव हुए. मेरे फादर कोविड पॉजिटिव हुए. हमारे ट्रस्टी राजवीर सिंह, वो 14 दिन ICU में रहे और उनको कैसे उनकी जान बचा करके हम वापस लेकर के आए हैं.
ये या तो हम जानते हैं या उनका परिवार जानता है या उनका वो ईश्वर जानता है। वो और उनके चारों बच्चे, उनकी वाइफ, पांचों के पांचों कोविड पॉजिटिव हुए। क्यों हुए? ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज में लोग हुए। तो जो भी ये एक प्रॉब्लम थी, एक डिजास्टर था, जिस टाइम पर हम लोगों को प्रूव करना था कि क्या हम उस सोसाइटी के लिए अवेलेबल हैं जिस सोसाइटी ने हमें आज यहाँ तक पहुंचाया है। आई ऑलवेज से, मैं अपने कोर्ट में कहता हूँ, सोसाइटी इज लाइक अ कैनवास हु नीड्स टू पेंट इट ब्यूटीफुली। हाँ, तो ये कौन लोग करेंगे? अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो कहाँ, आसमान से तो लोग नहीं आएंगे। हाँ, ईश्वर तो नहीं भेजेगा किसी को। ईश्वर ने अगर भेजा है तो वो हम लोगों में से भेजा है। तो फर्स्ट आई रियली वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दीज पीपल जिन्होंने अपनी जान हाथ में लेकर के इतना बड़ा काम किया। और एक कोट है इसमें मेरा कि जो लोग दूसरों के लिए फूल बिखेरते हैं कुछ उनके हाथों में भी रह जाती है। तो आप लोग जीवन भर महकते रहेंगे। इस बात को आप लिख लीजिए कि आप इस, ये हो सकता है 1 साल में भूल जाए, 2 महीने में भूल जाए, 5 साल में भूल जाए। ये जो नेचर है ना, ये नेचर आपका ये काम नहीं भूलेगा और आपको इन्हीं कामों की जो महक है वो आपकी जिंदगी में आएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई बोर्न इन स्लम एट द एज ऑफ 2 my parents left me alone. At the age of 8 I started selling balloons. At age of 13 मैंने कुछ नशे के लड़कों को बस नौकरी लगवा दी थी नशा छुड़ा करके। अब मुझे नहीं पता कि वो उन 10, 12, 15 लोगों का नशा छुड़ाना मुझे यहाँ तक ले आएगा। मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि 20-30 लड़कियों की शादी के लिए हेल्प कर देना मुझे यहाँ तक ले आएगा। तो जब आप दूसरों की जिंदगी में खुशबू बिखेरते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप महक उठती है। और ये आप देखिएगा, ये लॉन्ग रन में आपको 100% पता चलेगा। मैं आता हूँ टॉपिक पे। हम लोगों ने बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग किया। मेरा मानना है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बट बीइंग सोशली इन्वॉल्व, अगर हम सोशली इन्वॉल्व नहीं है और हम अगर डिस्टेंसिंग में इतना ज्यादा डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि हम यही भूल गए हैं कि हम एक इंसान है और हमें एक इंसान के काम आना है, तो ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट करेगा 2 सोसाइटीज के बीच में। और वो सोसाइटी कौन कौन सी है? एक वो सोसाइटी जो संपन्न है और एक वो सोसाइटी जो संपन्न लोगों की तरफ देख रही है। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ स्लोगन कॉल्ड कनेक्टिंग प्रिविलेज विद अंडरग्राउंड। जब हम लोग एक्टिविटीज पर गए तो फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम अम्बेडकर नगर स्लम। तो हमने माइग्रेंट लेबर्स को, खासकर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लेबर्स हैं, क्योंकि वो लोग जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहीं पर छोटा सा टेंट लगा के रहते हैं। उनके अपने घर नहीं होते, परमानेंट मकान नहीं होते, वो टेंट कैनवास के, तिरपाल के स्ट्रक्चर में वो लोग रहते हैं। तो एकदम से कंस्ट्रक्शन बंद हो गई थी, से लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद हो गया। उन लोगों को तो डेली ठेकेदार पैसे देता है, तो बगल की दुकान से जाते हैं, पैसा ले राशन लेते हैं, खाते हैं। उनके पास तो ना कोई बैंक अकाउंट, ना उनके पास कोई राशन रखने की जगह पहले कुछ भी नहीं। तो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग एसेंशियल कमोडिटीज कि हमने ड्राई राशन जो हमें उनको देना चाहिए। और बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने आया। वहाँ पर जो फीमेल्स थी, वो फीमेल्स हमारे पास आई और कहती हैं कि सर हमारे लिए तो राशन आपने दे दिया और दिल्ली गवर्नमेंट भी खिचड़ी वगैरह तो दे ही रही है, हम वहां से ले लेते हैं। लेकिन हमारे जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, 6 महीने पहले जो मेरा बच्चा पैदा हुआ है, 1 साल पहले जो मेरा बच्चा पैदा हुआ है, वो दूध नहीं पी सकता मदर डेयरी का। वो या तो मेरा दूध पीता है और मेरा दूध तब निकलता है जब मुझे प्रॉपर खाना मिलता है। मुझे भी दूध नहीं आ रहा है, मदर डेयरी का दूध भी अगर उसको सूट नहीं कर रहा है तो मैं उसको दूं क्या? तो ये हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंज था। हमने पूछा भाई आप क्या करते हो जब आपको दूध नहीं आता है? तो उन्होंने बोला कि हम पाउडर वाला दूध उसको देते हैं, डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है। तो हम लोगों ने इसको भी एक्सरसाइज शुरू किया। हम लोगों ने लोगों से मांगा, हमें इलेक्ट्रोजन के बॉक्सेस में, जो हमने लगभग 6000 बेबीज को हमने डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ग्रास रूट जो हेल्थ वर्कर्स थे उनकी आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व करके, जो पहले से दूध पी रहे थे उनको, क्योंकि ड्राई में अपना आस हो सकता है लेकिन उसको समझाना कि इसको पीना कैसे है, वो एक अपने आप में चैलेंज था। क्योंकि अगर पानी उबाल करके ड्राई मिल्क में अगर बच्चे को नहीं दिया जाएगा तो उसको हार्म कर सकता है। तो हमारे लिए खाली ड्राई मिल्क बांटने का काम नहीं था,
हमारे लिए ये भी काम था कि उस फीमेल को ये बताना कि बच्चे को पिलाना कैसे है, कैसे पानी उबालना है, कितने पानी में डालना है, वो बड़ा चैलेंज था। तो जब हमने ये काम करना शुरू किया तो एक एनजीओ हमारे भी पीछे लग गए। उन्होंने हमारी कंप्लेन शुरू की, भाई आप ब्रेस्ट फीडिंग के अगेंस्ट हैं, आप लोग मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रमोट करना चाहिए, आपको इन फीमेल्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीड मतलब ब्रेस्ट मिल्क को कैसे इंक्रीज किया जाए। लोग ये सोच रहे थे कि हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट दें या उनको ट्रेनिंग दें कि भैया आप ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस कैसे करो, और वो भी उन फीमेल्स को जो अपने खाने के लिए हमसे गुहार लगा रही है। ये अलग चीज थी। हम आगे बढ़े, हम करते गए, तो हम लोगों ने जो यूएसपी अपनाई, वो यूएसपी ये हम लोगों ने अपनाई कि हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया। हमारा मानना था, हमारा मानना था कि ज्यादा बड़े पेड़ के नीचे ज्यादा अच्छी छांव आती है। तो हमारा जो पर्पस था वो ये था कि अगर हमने डीएम्स को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर जो डीसीपीज हैं, एसीपीज हैं, अगर इनको अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लिया तो ये जो लोग जो कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो बड़े अफसर कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, इनको ग्राउंड की सिचुएशन का पता चलेगा। और जब इनको ग्राउंड की सिचुएशन का पता चलेगा तो एक एक ऑफिसर 1,000 एनजीओ के बराबर है। तो हमने डीसीपी को ले जाना शुरू किया। हमारी मोस्टली हर एक्टिविटीज में डिस्ट्रिक्ट डीसीपी प्रेजेंट रहे। हमने कैसे भी करके सिफारिश लगाई, कुछ भी किया, पर हमने क्लियर कहा कि जब तक डिस्ट्रिक्ट डीसीपी हमारी एक्टिविटी में नहीं आएगा, हम वहां पर एक्टिविटी नहीं करेंगे। इनके ऊपर भी प्रेशर था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। तो जब डीसी आता था तो सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा अच्छी पालन होती थी, पुलिस का पूरा महकमा लग जाता था। तो हम लोगों ने इनको सारे डीसीपीज को इन्वॉल्व किया, डीसीपीज को साथ लिया। तो उससे क्या हुआ कि हमारी एक्टिविटीज रेप्लिकेट, जो दूध वाली एक्टिविटी हमने दिल्ली में साउथ दिल्ली में शुरू करी थी, वो जब डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ने अपने ट्विटर पर डाली तो वो वेस्ट बंगाल में भी शुरू हुई, वो बेंगलोर में भी शुरू हुई, वो ओडिशा में भी शुरू हुई। तो उसका जो रेप्लिकेशन था, जो रेप्लिका था उस एक्टिविटी का, वो बहुत वास्ट होता चला गया। हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि लाडली फाउंडेशन या देवेंद्र गुप्ता की टीम जाकर के 50 लोगों को खाना दे रही हो तो वो बहुत बड़ा काम करते हैं, नहीं। हमारा काम ये था कि अगर हम 50 लोगों को खाना दे रहे हैं तो उस 50 लोगों को खाना देखते हुए कम से कम 50 लोग और इंस्पायर हो, और एक एक व्यक्ति अगर 50-50 लोगों की जिम्मेदारी ले लेगा तो 2,500 लोगों की, और ऐसे ही चेन। तो हमारा जो काम था चेन ऑफ चेंज मेकर, कि हम जब तक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आ सकते। और ये क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ तक जाएगी, अल्टीमेटली यू नीड हैंड्स। गवर्नमेंट पैसा आपको दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइंस है, उनकी गाइडलाइंस के बिना आपको पैसा नहीं मिल सकता। अब आपके लिए जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन थी कि आपको ग्राउंड से ही पैसा इकट्ठा करना है या ग्राउंड से ही सामान इकट्ठा करना है और ग्राउंड पर ही देना है। तो हमने यूएसपी जो अपनाई कि हम किसी से पैसा नहीं लेंगे। जब हमने ये बोला कि वी विल नॉट टेक रिसीव मनी, तो ये अपने आप में क्लैरिटी दे गया सोशली लोगों को, यार दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट आस्किंग फॉर मनी, वी वर आस्किंग फॉर द मटेरियल। तो जब लोगों को पता चलता है कि यार ये लोग पैसा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ सामान मांग रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको दिल से ज्यादा देता है, जितनी उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा देता है। तो वो साइकिल हमारी चल पड़ी, और उस साइकिल के थ्रू हम लोगों को कम से कम लगभग हमने 2.5 करोड़ रुपीज का राशन और सामान हम लोगों ने ग्राउंड पर इकट्ठा किया और हमने बांटा। हमने लगभग 1 लाख लोगों को 1 महीने का राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। 6,000 बच्चों को हमने ड्राई मिल्क हमने दिया। हमने लगभग 2 लाख सैनिटरी नैपकिन हमने जैसा अभी सब लोग बता रहे थे बहुत ज्यादा जरूरी था, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। उसके अलावा कुछ बच्चों का था कि शेल्टर, पुलिस ने हमसे कहा कि शेल्टर के जो बच्चे हैं, जो बेगर्स हैं, जो इधर उधर फुटपाथ पे रहते हैं, ये जो फुटपाथ पे सामान सेल करने वाले हैं, ये जो लोग हैं ये दिल्ली गवर्नमेंट के शेल्टर्स में रह रहे थे। अब इनके जो बच्चे हैं उनके आगे चैलेंज ये था कि इन बच्चों को शेल्टर के अंदर रोकोगे कैसे आप, क्योंकि इन्होंने निकल के भागना है। अब हर शेल्टर के आगे पुलिस लगा नहीं सकते। बड़े लोगों को आपने समझा दिया कि अंदर ही रहना, लेकिन बच्चों को कौन समझाए। तो उन बच्चों के लिए हमने पेंटिंग के पेपर्स, कलर्स, ये सारी चीजें, स्टेशनरी, ये हमने अवेलेबल कराई ताकि वो अपने घर में ही बैठे बैठे, वहाँ पे शेल्टर में रह रहे हैं, वहीं पे अंदर बैठे बैठे कॉपियां खराब करते रहे, कुछ तो सीखेंगे लेकिन बाहर नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा। तो वो सब चीजें रही। बट इन सब के पीछे हम लोगों का जो बेसिक जो हम लोगों का टारगेट था, हम लोगों का टारगेट था कि अवेयरनेस क्रिएट करना। क्योंकि
कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल तक काम कर सकता है, उनकी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते। हम लोग सरकार नहीं है। आज अगर जो दोनों प्रीवियस स्पीकर थे उन्होंने बताया कि ग्राउंड पे कितना अच्छा उन लोगों ने काम किया, तो उनकी भी एक लिमिटेशन रही थी। लेकिन जब हम अपनी चीजों से लोगों को अवेयर कराने लगते हैं, जब हम सोशली उसको एक्सपोज करने लगते हैं, तो वो रेप्लिका होती चली जाती है। जैसा मैंने पहले बोला, हमने फिर इनको इश्यूज में तब्दील किया। हमने क्या करा कि अब हमारी जो एक्टिविटीज थी, उन एक्टिविटीज में जो हमें इशू नजर आने लगे थे, उन इश्यूज को हमने बड़े प्लेटफॉर्म पर उठाना शुरू किया। हमने वेबिनार करने शुरू किए। हमने सीनियर ऑफिसर्स के जो आईएएस ऑफिसर्स के जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमने अपने जानकार लोगों से वहां पर डलवाना शुरू किया उनसे। इसमें 2-3 चीजें हम लोगों ने करी। एक कि जितनी भी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनमें पानी के कनेक्शन नहीं है। वहां पर टैंकर्स जाते हैं। जब वहां पर टैंकर जाते हैं तो किसने सोचा है कि जब एक टैंकर पानी का आता था, लोग पाइप और बाल्टी लेके कैसे उस टैंकर पे टूटते हैं। किसी ने नहीं सोचा कि वो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कैसे कराओगे। किसी ने ध्यान नहीं। हम लोगों ने उस इशू को रेज किया। हम लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट तक बात करी कि जब आप देखते हैं कि एक टैंकर पानी के लिए यहाँ पर झगड़े हो जाते हैं और लोग चिपक चिपक करके पानी लेते हैं, पूछ के पानी लेते हैं, तो उन लोगों को आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग से बचाओगे। इसका अंदाजा हमें लगा जब हम बसंत में सामान देने के लिए गए, राशन बांटने के लिए, तो 2000 लोगों की भीड़ हमारे ऊपर टूट पड़ी। तो जैसे ही एक तरफ राशन की भीड़ टूट पड़ी, तो सडनली क्या हुआ, उधर पानी का टैंकर आ गया। तो भीड़ जो है 2 भागों में डिवाइड हो गई। आधी भीड़ चिपक गई टैंकर के ऊपर, आधी भीड़ चिपक गई। हम लोग लिटरली हम लोगों को भागना पड़ा वहां से। हमने सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इनको कैसे आप इन लोगों को समझाओगे। तो उन लोगों को नहीं समझा सकते। 40% लोग उसमें रो रहे थे क्योंकि उन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। ये अलग चैलेंजेस थे। लेकिन चैलेंजेस को ग्राउंड पे देखने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि सिस्टम का कोई व्यक्ति ग्राउंड पर अवेलेबल, सिस्टम के जो डिसीजन मेकर्स थे वो ग्राउंड पर अवेलेबल थे। तो हमारे लिए चैलेंज था कि उस सिस्टम की उस चीज को वहां तक पहुंचाना है। जब पेशेंट दिल्ली में 1000 से 2000 हुए, 2000 से 5000 हुए, तो नए चैलेंजेस क्रिएट हुए। क्या चैलेंजेस क्रिएट हुए? हमें झुग्गी झोपड़ी में पता चला कि जो लोगों को कोविड सिम्टम है, उन लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर दिया। क्यों घर में बंद कर दिया है? वो टेस्ट के लिए जाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट के लिए जाएंगे तो क्या होगा कि पुलिस जो है उनका एरिया सील कर देगी। उनका एरिया सील हो जाएगा तो क्या होगा कि पड़ोसी जिंदगी भर ताने देंगे कि तेरी वजह से हमारा घर सील हो गया, तेरी वजह से हमारी गली सील हो गई। तो वो लोग जिस प्रोजेक्ट पर हम लोग लगभग 2 साल पहले से काम कर रहे हैं कि स्लम्स में जो लोग सेल्फ मेडिकेशन पे डिपेंडेंट हैं, उनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर क्या होता है, वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, वो केमिस्ट को ही अपना भगवान मानते हैं। उन लोगों ने घरों में दवाइयां, घरों में पीसीएम लेना शुरू कर दिया, घरों में एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दिया। बचने के लिए डिफरेंट चीज की चीजें करनी उन्होंने शुरू कर दी। सेल्फ मेडिकेशन का हाल ये हुआ कि हर बंदा ये समझने लग गया कि मैं तो ठीक। जहां पर एसिम्टोमेटिक जब शुरू हुआ तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करवाया था, तो तुगलकाबाद में एक घर में एक गली में 57 लोग निकले। संगम विहार के L16 जो गली है, वहां पर 106 लोग निकले। तो ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जिनके की शुरू में परिवार वालों ने अपने आप को बंद कर लिया, टेस्ट नहीं कराया था। और वो सिचुएशन आज भी। आज अगर हम बात करें, जब कोरोना 5% था तो हम लोगों में डर 95% था। आज जब कोरोना 95% है तो हमारे अंदर डर 5% रह गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है दिमागी तौर पर। तो ये जो चीजें रही, जो काम किए, उनका जो एक मैं कहूँगा कंक्लूजन निकल करके आया, जो आगे भी हम लोगों को देखना है और उसको चलना है, वो ये है कि आज से पहले भी, कोविड से पहले भी बुखार होता था लोगों को, कोविड से पहले भी गला खराब होता था लोगों का, कोविड से पहले भी ये सारे जो सिम्टम आज हमें आ रहे हैं, डायरिया के, टेस्ट लेते के, पहले भी आते थे हम लोगों को, लेकिन हमने उसको दिमाग की तरफ उठा लिया। तो आज हम लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। अगर हम इन लोगों को मेंटली सेंसिटाइज नहीं करेंगे तो इसकी फ्रस्ट्रेशन, जैसा अभी वो जिक्र कर रहे थे कि घर में मारपीट होना, शराब ज्यादा पीना, काम नहीं है, फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी। ये तो जो सारी फ्रस्ट्रेशन पहले से काम कर रही थी वो कर ही रही थी, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन और माइंड पे आ गई। तो मेरा मानना है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है, मेरे ख्याल से Q&A भी आपको लेना है, कि हम लोगों के दिमाग से, क्योंकि जितना आप राशन बांट सकते थे आपने बांटा, आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं और आगे होते चले जाएंगे। आज बेरोजगारी
की जो ढलान है वो ऐसे है। अब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा गिरते चले जाएगा ग्राफ, बहुत बुरा हाल आने वाला है। मैं लिटरली, हाँ, हम स्किल पे बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम को लेकर के दिल्ली पुलिस के युवा प्रोग्राम में हम इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी थे। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहां पर उन लोगों को ट्रेनिंग तो दे दी, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो क्या हुआ कि वो जो बंदा छोटा सा जो पियोन का काम कर रहा था, वो कह रहा नहीं जी मैं तो ट्रेंड हूँ, मैं तो उससे नीचे काम ही नहीं करूंगा। तो पहले उसको जो 12,000 रुपए मिल रहे थे, वो कह रहा था मैं 21,000 से सैलरी से नीचे काम नहीं करूंगा। तो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, हम लोगों को जॉब क्रिएशन पे काम करना पड़ेगा, हम लोगों को सब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, जो बेसिक लोगों को, आज अगर लोगों की 15,000 रुपए की जॉब जा रही है और वो 5,000 रुपए में कैसे गुजारा कर रहे हैं, हमें उस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि अभी तो जो समय खराब है वो है, आने वाला समय और खराब ना हो, इसके लिए ऑलरेडी एक लाइफस्टाइल चेंज लोगों की जिंदगी में आ चुका है। कोविड से बहुत बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे वो मीटिंग्स को लेकर के हो, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर के हो, चाहे वो पब्लिक एंगेजमेंट्स को लेकर के हो, पब्लिक इवेंट्स को लेकर के हो, पॉलिसी रिफॉर्म्स है वो आ रहे हैं। हमें उनका, उसमें हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, एक वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हम अपने आसपास में कितने लोगों की जिम्मेवारी ले सकते हैं। आई डोंट थिंक कि मेरे को बंगाल में जाके काम करने की जरूरत है। अगर मैं दिल्ली में अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने जिले में भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, अपने नियर एंड डियर, अगर मैं अपनी कॉलोनी में मेरे जो मेड्स रह रहे हैं, मेरे गार्ड्स रह रहे हैं, जैसा शुरू में हमने बोला, बहुत अच्छा बोला कि हम अपने प्लम्बर का ख्याल रख सकें, हम अपने सर्वेंट का ख्याल रख सकें, यही बहुत बड़ी चीज। अल्टीमेटली मेरा जो सर्वेंट है वो कहाँ से आ रहा है, उसी स्लम से आ रहा है जिस स्लम में मैं खाना देने जा रहा हूँ। तो मैं नाम के लिए वहां पे जाना चाह रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड है, मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाह रहा। तो वी शुड स्टार्ट अ चेंज दैट हमें इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना पड़ेगा, हमें डोमेस्टिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना पड़ेगा, उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। जो हम इन चीजों का को एडॉप्ट कर लेंगे तो आप देखिएगा कि एक चेन क्रिएट होती चली जाएगी, और वो चेन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनती चली जाएगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you to Tavish, thank you, Seth, thank you, Sarah, and thank you, sir. First of all, I would like to thank you all for coming together, for taking out time from all the situations and all you guys, everybody is working on the giant specific app. First, उसके लिए दूसरी बात, yes, we are right. I think what we can go forward with is, first of all, yes, we have to work on the infrastructure. हमें चीजों में बदलाव चाहिए, हमें लोगों की सोच और लोगों अपनी सोच उनके प्रति भी बदलाव चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअली भी आप लोगों को चेंज होना पड़ेगा टू ब्रिंग दैट चेंज टू समबडी एल्स लाइफ। वो एक बहुत बड़ा चेंज हम वांट दैट। यस, एंड coming to that, I would open the chat box for question and answers. All the participants are free to forward their questions in the chat box. You can please specify the name if you want to address to certain speaker, and if not, I will let the question know to the speakers and then they can answer. The participants can join in and put forward their questions. स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग एक्सेस टू एजुकेशन। जी जी हाँ। So we already work in Bihar and in Satpura forest in Uttar Pradesh. So वहाँ actually ये problem है that बिहार में एंट्री बंद है, so how do we tackle it? वहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि अंदर लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन हो। तो उस केस में we need innovation in this sector, education। डिजिटल तो है ही, लेकिन अब जैसे बिहार में हम लोग ने बाकी एनजीओ ने काम कराया कि बिहार में एक खुद का रेडियो स्टेशन, जितना भी कंटेंट है वो MP3 फॉर्मेट में उसमें ब्रॉडकास्ट किया जाए। एक तो ये इनोवेशन निकल के आया। तो ऐसे ही हमें और सोचने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में जहाँ इंटरनेट नहीं है, सतपुड़ा जंगल में जो कम्युनिटी था, हमने एक आईला नंबर निकाला है। उसपे क्या है कि आप किसी फोन कॉल कर सकते हैं। आप जैसी कॉल करेंगे तो वो लोकल लैंग्वेज में, वहाँ की कोरकू भाषा है, वो कोरकू ट्राइब कहलाता है, तो उनकी कोरकू भाषा है, तो लोकल लैंग्वेज में ही वो आपको ऑप्शन देगी कि आप कौन सी क्लास में है और आपको कौन सा सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो जैसे वो आप नंबर इनपुट डालेंगे, वो आपको ऑडियो के थ्रू आपको सुनाई दे सकता है, वो 2, 4, 5 मिनट का इस तरह से। ये इनोवेशन हम लोग सोच सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, जो हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं। तो आई एम श्योर वो जो डिजिटल डिवाइड है कि हाई इनकम
स्कूल्स में या हाई इनकम बैकग्राउंड के बच्चों को तो इंटरनेट और लैपटॉप और टैबलेट्स मिल जाएगा, जो हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो उनके लिए वहाँ इनोवेशन की जरूरत है इसी तरह से. Thank you so much, Tavish. Now we have a question from Smriti Sharma to Saif. So she is asking that with respect to your skill training strategy, have you considered the involvement of vulnerable groups such as sex workers and transgenders in developing new skills and rehabilitate them? So over to you, Saif. Yes. We have kind of worked with a lot of transgender groups, LGBTQ plus communities, and sex workers in the past. Like we have done programs and what do you call it? We've done programs and retreats, and workshops with them. So we also did, if you know, the Queer Muslim Project is an organization run by Rafi Alco. We have done first ever Indian Muslim retreat with them, and we have done. There's an organization called Tweet Foundation. It's a transgender collective. We have done a lot of workshops with them in that matter. And as far as the audience goes, so as an organization, we have always kept our audience kind of very vast. We work with basically everybody who's in need of a support system, and we will surely, if there is a need in a particular community, and if you know of such audience somewhere, we would love to get in touch and do our need analysis and start something around. Thank you, Saif. We have another question. So there's this Rashmi, Kriti says, thank you, Saif. There is Rashmi. We have been receiving calls because now the migrant laborers have return as there are lack of job opportunities in their hometown. How to overcome that? If you can help or maybe guide me what to do so that I can help them. I think it's like it's there for everybody. If anybody would want to like answer it, I would say Davish if you could go into that. Yeah, so it's already a situation. I acknowledge that the people that we have sent on buses, they are already calling us, asking if it's possible to get them jobs. So that is something again I would say कि I think we need authorities and policy level changing on that, क्योंकि मनरेगा तो है वहाँ, लेकिन अब वही वहाँ ब्यूरोक्रेसी है. कुछ ही लोगों को मिल रहा है मनरेगा कार्ड जिससे वो काम कर सकें. बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अगर अगर खेती है, लेकिन खेती में अभी वहाँ बहुत बारिश हो रही है, काफी नुकसान हुआ है, तो वो एक तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही है कि जहाँ पहले काम 5 करते थे वहाँ 10 कर रहे हैं. तो इस तरह से प्रॉब्लम्स हैं. अगेन इसमें इनोवेशन की जरूरत है कि वहाँ किस तरह से कितनी क्विकली वी कैन सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ की वहाँ से वहाँ की पॉपुलेशन जो है उसको अब्सॉर्ब कर पाए. बाकी बाकी इफ वी कैन we are also partnering with organizations जो उस लेवल पे रिसर्च एक स्टडी कंडक्ट कर रही है, इससे एटलीस्ट जो लोग बाहर वापस चले गए हैं उनके स्किल्स को हम लोग जान पाए कि वो शहरों में किस तरह का काम करते थे, और एक तरह से वो एक डेटाबेस जिस दिन मिल जाए, जब अगर उस पर मेहनत करके हम लोग निकाल लें, तो फिर एग्जैक्टली जो सिटीज में है तो उन फोरम से कनेक्ट कर. जैसे यहाँ जो दिल्ली का लेबर फोरम है जो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज है, जैसे रेस्टोरेंट में जो जितने भी वेटर्स हैं अगर उनका है, तो उनसे इस तरह से स्किल को जानने और इस तरह से फोरम से मेट्रोपॉलिटन में कनेक्ट. So I think this is one of the ideas that we are exploring. Similarly, I think this calls for innovation. Such Sir, Devendra sir, I would like to have your input as well in this question. मैं इसमें डिफरेंट एंगल है मेरा इस पे सोचने का. जैसा अभी तविश ने कहा, सही कहा, ऑर्गेनाइज सेक्टर है एक और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मल्टीपल थिंग्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मल्टीपल.
वो भी वर्कर हैं जिनको PF मिल रहा है, तो वो अपने PF की वजह से आज भी चिपके हुए हैं, कहीं नहीं गए हैं, वो थोड़े दिन के लिए गए हैं, वापस आ गए। एक सेक्टर वो है जो रेडियल पटरी वाले थे, जो क्योंकि आप देखिए जो माइग्रेंट लेबर में जो लोग ये थे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, ये कहीं ना कहीं लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड थे, इनके नाम से सर जमा हुआ था, इनके नाम से और बहुत सारी चीजें होती, लेकिन उसमें भी कई ऐसे थे जो नहीं होते थे। अब यहाँ पर दो चीजें सामने आती हैं, जो रेडी पटरी वाले थे या जो अनऑर्गेनाइज या अनलिस्टेड माइग्रेंट लेबर्स थे, उनका क्या होगा, वो गाँव जाकर के क्या करें। मैं मेरी कई डिस्ट्रिक्ट में बात हुई है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सीनियर से बात हुई है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें शुरू हो गई, क्राइम रेशियो बढ़ना शुरू हो गया। कैसे कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये माइग्रेंट लेबर शहरों में आई क्यों थी, इस बात पे आपको जाना पड़ेगा, रूट पे जाना पड़ेगा कि शहरों में आए क्यों थे, क्योंकि रोटी इनको वहां पर भी मिल रही थी, खेत इनके पहले से ही थे, किसी न किसी के खेत में रहकर के काम करते थे, लेकिन वहां इनको रिस्पेक्ट नहीं मिली, वहां इनको आत्मसम्मान नहीं था, क्योंकि कास्ट, तो जो लोअर कास्ट के जो वर्कर्स थे, जो शेड्यूल कास्ट के जो वर्कर्स थे, गांव में उनके साथ बहुत ज्यादा छुआछूत होता है, बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार होता है, उनको घर में वो किसी का दरवाजा तक टच नहीं करने दिया जाता था, कुएं उनके पानी लेने के लिए अलग होते थे, है वो किसी के घर के सामने से निकल नहीं सकते, जमींदार से वो दूर से बात करते। तो वो सब चीजें, जो शोषित समाज था, वो बहुत दिनों से उससे निकलना चाह रहा है, तो निकलने की चाह में कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई इधर गया। तो वो सारे लोग आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले दिल्ली, मुंबई, इन शहरों में जाकर बसे, तो वहां उन्होंने नई दुनिया देखी, नई दुनिया देखी, उनको काम के पैसे मिलने लगे, पैसे तो मिलने लगे, पैसे वहां भी मिल रहे थे, लेकिन वहां कम मिल रहे थे, यहाँ थोड़े ज्यादा मिलने लगे। लेकिन ज्यादा में सबसे बड़ी एडवांटेज उनके साथ क्या हुई, उनके साथ कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं यहाँ होता, अदर देन गांव के मुकाबले शहरों में कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। यहाँ पर पानी एक ही नल से आता है या टैंकर से आता है, तो ब्राह्मण को भी उसी में से पानी लेना है और शेड्यूल कास्ट को भी उसी में से पानी लेना है, तो वो सारी चीजों की यहाँ पर लोगों को आदत पड़ गई। जब ये लोग यहाँ से वापस गाँव गए हैं, तो वो व्यक्ति 10 साल से 15 साल से एक सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ स्टीम को एंजॉय कर रहा था, अब वो वहां जाकर के देख रहा है कि मुझे वापस से उस कुएं से पानी नहीं लेना है, मुझे वहां पर वापस से मैं जमींदार के आगे मुझे रोजगार मांगना है, वहां पर मैं देखूंगा कि मेरे से अपर कास्ट का अगर व्यक्ति है तो वो मेरे को गंदी नजरों से देखेगा, तो वो सारी चीजें वहां पर शुरू हो गई और ये लोग वहां पर ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। अभी भी बहुत सारे लोगों ने बहुत तेज स्पीड में वापस से शहरों की तरफ रुख कर लिया है और ये आना शुरू हो गए। तो अब सरकार को इस लेवल पे सोचना पड़ेगा कि इस सिचुएशन का क्या समाधान निकाला जाए। मेरा मानना है जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जिस तरीके से बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उनको हम एक ही जगह पर लगाने की बजाय डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको हम लगाएं। हम डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करें कि भाई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री लगाना चाहता है, आज हमने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब बना दिए हैं, कि हमने नोएडा में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना दिया, इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया, तो हम लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि आप नोएडा में सेटल हो। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। क्यों? क्योंकि हम क्यों उनको दूसरे गाँव से बुला करके नोएडा में सेटल करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गाँव में है और अगर मैं वहां पर इंडस्ट्री को ले जाता हूँ और मैं और डिफरेंट डिफरेंट गाँव में आप देखिए ना, उसका नाम बठिंडा गए थे हमारे साथ, बठिंडा में रिफाइनरी लगी, तो आप देखिए कितने गाँव वहाँ के आसपास की पूरे बठिंडा को रोजगार मिला वहां पर। हाँ? किसी को कोई रोजगार मिला, किसी को कोई रोजगार मिला, किसी को कोई रोजगार मिला। तो रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जब तक हम वो गाँव में नहीं तैयार करेंगे और गाँव में हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक ये सारी दिक्कतें आते रहेंगी। बाकी लेबर का पलायन ये सब चलता रहेगा। जरूरत के मुताबिक जो लेबर गई थी वापस आना वो भी हो गई है, और जब यहाँ से अभी जो लेबर ऐसी है, जो पढ़ी लिखी लेबर है, जिसकी ऑफिस छूट गया है, जिसको अपनी कंप्यूटर पे जॉब करनी थी वो छूट गई है, अभी वो भी आना शुरू करेगी। तो ये अभी चलन जो है ये वो ही करेगा। ऑल्सो टू ऐड टू दिस, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के साथ हमारा ना हमने अनटचेबिलिटी को रीएस्टैब्लिश कर लिया सेफ्टी के नाम। सेफ्टी बोल के हमने अनटचेबिलिटी रीएस्टैब्लिश कर लिया। हमने बोला है कि हम सेफ रहना है, दूर रहेंगे, बट हम दूर नहीं से रह रहे हैं। जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो हमारे प्लम्बर्स हैं, हम दूरी अपने सर्कल में नहीं बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर चलो we still have parties where we are at least doing something. The re-establishment of untouchability has come down, safety और purity के नाम पे। वो where I think it just needs to change. To you moving forward, Yagya Tiwari has a question for the Yellow Streets. She says that now what as youth we can do our bit
to help the downtrodden groups by sitting at our homes. She's asking for a small idea, something she can make a difference, like being there at home. Yeah. So just a small example. We in this project we were running for the relief work, we invited a lot of youth from different walks of life to the COVID response volunteer team, and people who were just sitting at home and doing the list, mapping out the communities, making calls to check if it's genuine or not, resource mobilization. There were a lot of things that were going on. Also, all of my the rugby players, the senior players which I have, they are also present on this call currently. So all of those young leaders, young rugby players are also have also participated in talking, delivering, doing all of the sports, and that is what the power of youth is. The vigor, the curiosity to learn, and the initiative, the onus to make things happen. This is what always amazes me, and I'm very thankful to get a certain question and certain an advice which Yahya Tiwari has asked. So I think after this call ends, I would like to invite people in this group, including Yahya, if they want to contribute in any capacity. Because we have a lot of new projects going on, and we have a lot of new ventures which we have started. We require volunteers, we require interns, and we also require people who can come to join different projects in different communities. So yes, after this call, you can contact Muskan and take our numbers, and we can talk about it, how people can come and contribute from their homes. Sure. Okay, so moving to, there are a lot of questions. I have to hurry up with this. So Vikas has asked Devendra that, as you said, that people are not serious about COVID and moving lead to community transmission. So are we doing anything related? पर इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत लिमिटेड रोल है। ये जो क्वेश्चन है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो शुरू हुआ है, इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत लिमिटेड रोल है। इसमें गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है और गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जिस लेवल पे काम कर रही है कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, वही इस बारे में डिसाइड करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में डिसाइड करने की ना उनकी कैपेसिटी है, ना उनके पास इस तरीके के रिसोर्सेज हैं। हाँ, हम लोग एक अवेयरनेस ही क्रिएट कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये लोगों को हम ये बोलें कि भाई जितना हो सका उतना कम बाहर निकलिए। जब आपके घर में कोई सामान लेकर के आप आ रहे हैं तो आप उसको कुछ देर तक बाहर रखिए। आप सैनिटाइजर को सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं, वही है। बाकी मेंटली लोगों के दिमाग में आप ये नहीं कह सकते कि आप डरो। आप डरना क्यों कम हो गए? आप क्यों कम डर, है ना? पहले तो आप ज्यादा डर रहे थे, अब आप कम डर रहे हो, तो हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आप ज्यादा डरो। हमें लोगों के मन में से उस डर को वापस से निकालना है, कोविड की जानकारी ज्यादा से ज्यादा देकर के। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो A.K. अग्रवाल हैं, पद्मश्री हैं, ही वाज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लास्ट ईयर। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने क्या कहा कि अगर आज इतना कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है और मोस्टली जो पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनको सिम्टम नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या करा, एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी कुछ सिम्टम बताने शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने बोला कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में 30% चांसेस कम है कोविड होने के, बच्चों में 70% कम है। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि अगर आपको कड़वा टेस्ट नहीं आ रहा है और आपको नमकीन नहीं आ रहा है और आपको खट्टा टेस्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब यूर माइल्ड कोविड। उन्होंने एक स्लोगन दिया कि अगर आपको माइल्ड है तो इसका मतलब बल्ले बल्ले, तो आप कोविड हो जाएगा, आपका ठीक भी हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो लोगों को पैनिक क्रिएट ना हो और लोगों के मन में इसका डर ना हो, लेकिन कंसर्न जरूर हो। हमें कोविड का कंसर्न तो लोगों के माइंड में रखना है, क्योंकि कोविड का कंसर्न रखने से क्या हुआ, लोगों ने फालतू में घूमना बंद कर दिया। लोगों ने भले आज तक कोई हाथ नहीं धोता था इतना, आज सबने हाथ धोने शुरू कर दिए, सब गोवा करना शुरू हो गए, लोगों से नमस्ते करनी शुरू कर दी, तो विच इज अ गुड कल्चर। तो एक कल्चरली रेवोल्यूशन आया है, एक लोगों का लाइफस्टाइल चेंज आया है। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें अडॉप्ट करी हैं जो लॉन्ग रन में नेचर को फायदा देने वाली है। आप देखिए कि हाथ धोने जो शुरू हुए, इससे खाली कोविड से बचाव कोई हुआ है, इससे 50 और बीमारियों से भी बचाव शुरू हो गया। आने वाले टाइम में जब लोग वॉश की
ट्रेनिंग देते देते WHO मर गया, कोई लेना नहीं चाहता था। आज हर कोई वॉश की ट्रेनिंग अपने आप कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आज खाली कोविड से नहीं बचेंगे हम, कोविड की प्रिकॉशन अगर लेंगे तो हम ट्यूबरक्लोसिस से बचेंगे। पहले रोहतक में क्या होता था, बठिंडा में क्या हुआ, वहाँ एक ही हुक्का है, उस एक हुक्के से 20 औरतें 20 आदमी एक ही हुक्के का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या होता था, एक को अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो वो 20 लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होता था। अब क्या है कि वो एक हुक्का अपना इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं गाँव वाले लोग। तो शहरों में तो ठीक है, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, आप हुक्का मारने जाते हो, बट गाँव में तो पीतल का हुक्का होता है, वो एक ही हुक्का तू भी ले तू भी ले तू भी ले। तो वो चीजें क्या करती है, वो चीजें ट्यूबरक्लोसिस को बढ़ावा देती थी। वो ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ क्या बढ़ता था, लंग कैंसर का खतरा बढ़ता था। है, आप देखिए कि लोगों ने तंबाकू का सेवन कम कर दिया है, थूकना कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप ये वाली चीज कहाँ लीड करेगी, ये चीज कैंसर की तरफ लीड, कैंसर को रिड्यूस करने में लीड करेगी। कोविड से जो लाइफस्टाइल चेंज आए हैं विकास, मेरा मानना है कि ये लाइफस्टाइल चेंज जो है आने वाले टाइम में बड़ा रेवोल्यूशन लाएंगे। जो एयरबोर्न डिजीज है, आप देखिएगा लोग प्रिकॉशन लेंगे तो एयरबोर्न डिजीज कम होंगी। हाँ, जो टचिंग वाली, जो एक दूसरे को टच करके जो बीमारियां होती थी वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। और आप देखिएगा कि लोग अपना ध्यान ज्यादा रखने जब शुरू हो जाएंगे तो डायरिया हुआ, वायरल हुआ, निमोनिया हुआ, हर बीमारी पे इसका फर्क आना है, हर बीमारी पे फर्क आना है। तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस लाइफस्टाइल को बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ। लोगों को कंसर्न रखना चाहिए, उतना नहीं। यस मुस्कान। कैन यू हियर मी मुस्कान? Hello, sir. I think Muskan has got disconnected. Yes. So we are having a lot of questions more. So we can do one thing. Hello. Am I audible? यस, तो सर हम ये क्वेश्चंस कलेक्ट करके एक बार हम आप लोगों को सबको एक बार फॉरवर्ड कर देंगे। सो या बिकॉज ऑफ रनिंग वी आर आउट ऑफ टाइम। हेलो, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। ओके, तो सर जो फिर हम इसको अभी हम यहाँ पे वाइंड ऑफ करेंगे। कॉल के लिए। हेलो नितिन। हेलो, okay. Thank you. Hello everyone. So we are concluding this webinar session here. I, Nitin Arora, on behalf of the Vertex Law Chambers, would like to extend a very hearty and thanks to all our respected speakers, Mr. Devendra Gupta, Mr. Shafullah Khan, Ms. Lisa, and Mr. Tabish, who blessed us with their presence and knowledge and took out their valuable time from the busy schedule. I would also like to extend a special thanks to Ms. Muskan for moderating this event and giving us her precious time. I would like to thank all the participants and the viewers of this event, and I'd ask a big thanks to our team of the Vertex Law Chambers. Thank you everyone for your contributions. And participants are requested to kindly fill the feedback form that will be shared in the comment section. Thank you everyone and have a nice evening.